Hello students, good time to all. I am Chandan Kumar Pradhan. Welcome to your YouTube channel Chandan Physics. In this video, we are going to discuss the short questions of analog systems and applications. Let's begin. एठारे आमे analog systems and applications core paper रा unit number 2 bipolar junction transistor biasing and amplifiers यार short questions गुड़ी को आलोचना करिवा। short question रा टाइप रहिबो fill in the blanks शून्य स्थान पूरण कर। each question is of 1 mark। प्रत्येक क्वेश्चन मूल्य 1 नंबर रहिबो। क्वेश्चन नंबर 1 in a transistor dash is heavily doped। ट्रांजिस्टर रे आम एमिटर बेस कलेक्टर देखुचे। इट मे बी एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर हो पारिबो। तो सेथिरे केउ पोर्शन को अधिक मात्रा आम डोपिंग कराउछ एमिटर बेस कलेक्टर आइदर एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर सेथिरे अधिक डोप्ड हेउछि एमिटर सेक्शनटा अधिक डोप्ड हबो। तापरे मिडिल रे के रहउछि बेसटा ताठाउ टिके स्लाइटली कम डोप्ड हबो। एमिटर बेस कलेक्टरटा सबुठारु कम डोपिंग हबो मॉडरेट डोप हबो। काहेकि कारण एमिटर रु आइदर इलेक्ट्रॉन आसी परिबो किंबा होल्स आसी परिबो। मनकर पी टाइप सेमीकंडक्टर यूज करा जाइथिबो। पीएनपी सिचुएशन को हम देखिबा। पी टा दिया एमिटर भलिया काम कर। पी रो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स तामे होल आसी परिबो। यदि एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करा जाइथिबो एठे एमिटर रे एन टाइप सेमीकंडक्टर आमे व्यवहार करूचे। एन रे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स तेनु करी इलेक्ट्रॉन आसीबो। इन ए ट्रांजिस्टर डैश पोर्शन इज हेवीली डोप्ड। एमिटरटा हेवीली डोप्ड रहइबा। एमिटर पोर्शनटा एमिटर डैश इज द मिडिल पोर्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर मिडिल लेके रहउची बेस एमिटर बेस कलेक्टर तो बेसटा तार मिडिल पोर्शन रहइबा। इन ए ट्रांजिस्टर डैश इज लाइटली डोप्ड के एमिटर रहला हेवीली डोप्ड ताठा टिके कम आसीबा। बेस इज लाइटली डोप्ड। क्वेश्चन नंबर 4 डैश is the zero signal values of the collector current and collector emitter voltage। सही पॉइंट को आमी कहिबा क्यू पॉइंट हेउची सही पॉइंट जेउठारे कलेक्टर करेंट रा वैल्यू 0 एवं कलेक्टर एमिटर वोल्टेज रा वैल्यू मध्य 0। That is known as zero signal values of collector current and collector emitter voltage. That point is known as Q point. Question number 5 dash is the point at which the DC load line intersects that IB is equal to IB saturation। बेस current तार saturation value को achieve करिवो जे DC load line रो सही point को कोन को आजिवो। That point is called saturation point। सैचुरेशन पॉइंट हेउची सही पॉइंट से डीसी लोड लाइन रो सही पॉइंट को हमें सैचुरेशन पॉइंट कहवा जेउठारे बेस करेंटा तार सैचुरेटेड वैल्यू को अचीव करथिबो। आईबी इज इक्वल टू आईबी सैचुरेशन। क्वेश्चन नंबर 6 डैश इज द पॉइंट एट व्हिच द डीसी लोड लाइन इंटरसेक्ट्स दैट आईबी इज इक्वल टू 0। बेस करेंट जेते 0 हो से डीसी लोड लाइन रे से पॉइंट को कह कट ऑफ पॉइंट। दैट पॉइंट इज नोन एज कट ऑफ पॉइंट इज द पॉइंट एट व्हिच द डीसी लोड लाइन इंटरसेक्ट्स दैट आईबी इज इक्वल टू 0 कर्व। क्वेश्चन नंबर 7 इन ए ट्रांजिस्टर डैश इज मॉडरेटली डोप्ड सबठारु कम डोपिंग रहउची कलेक्टर रे। हाईली डोप्ड एमिटर नेक्स्ट लाइटली डोप्ड बेस मॉडरेटली डोप्ड कलेक्टर। क्वेश्चन नंबर 8
डैश इज द रीजन बिटवीन सैचुरेशन रीजन एंड कट ऑफ रीजन सैचुरेशन रीजन एवं कट ऑफ रीजन मध्यवर्ती रीजन को आम कहवा एक्टिव रीजन ताकि से डीसी लोड लाइन आम जानूचे डीसी लोड लाइन रे सैचुरेशन पॉइंट जाइले कट ऑफ पॉइंट जाइले एवं से रीजन मध्य जाइले जहाँ को आम कहे एक्टिव रीजन जहाँकि सैचुरेशन रीजन एवं कट ऑफ रीजन मध्यवर्ती रीजनटा in dash state of transistor the emitter junction and collector junction are on state transistor biasing रे आम emitter junction देखिबा अन्यटी collector junction देखिबा जो दीटा जांगा on state रे रहिबो emitter junction on एवं collector junction on तेबे सेही प्रकार स्टेट को आम कौन कहवा that type of state is known as saturated state से भली भाव में in a dash state of transistor the emitter junction and the collector junction are in off state दीटा जाक ऑफ रे रहिबो ट्रांजिस्टर रो एमिटर जंक्शन ऑफ रे रहिबो एवं ट्रांजिस्टर रो कलेक्टर जंक्शन मध्ये ऑफ रे रहिबो से प्रकार स्टेट को हम कहबा कट ऑफ स्टेट क्वेश्चन नंबर 11 in a dash state of transistor the emitter junction is in on state and collector junction is in off state emitter junction टा on state रे रहउची collector junction टा off state रे रहउची से प्रकार स्टेट को आमे कहिबा एक्टिव स्टेट तो तीनटा जांग स्टेट को वर्तमान लक्ष्य करनियो सैचुरेटेड केते बेले दीटा जांग ऑन रे रहिले कट ऑफ केते बेले दीटा जांग ऑफ रे रहिले यदि प्रथमटी ऑन माने एमिटर जंक्शन टा ऑन एवं कलेक्टर जंक्शन ऑफ रहइबो वी have the state that is known as active state. Next, IC collector current is equal to alpha times of IE plus dash. Alpha हमें जो current amplification factor कहूचे base current amplification factor alpha, emitter current amplification factor beta, collector current amplification factor gamma. IC collector current टा alpha times of IE plus CBO. That CBO means this is the leakage current जोटा को आम कहूचे कलेक्टर बेस इठारे एमिटर टा ओपन रहुछि कलेक्टर बेस करंट whereas emitter is open and that current value is called leakage current. IC is equal to alpha IE plus ICBO collector base open. IC is equal to beta times of IB plus dash से भली भाव में that current is known as ICEO collector emitter इटारे बेस टा ओपन रहिबो collector emitter current whereas base is open. Next, gamma is equal to 1 plus beta. Gamma collector current amplification factor is equal to 1 plus beta base current amplification factor, sorry, emitter current amplification factor. Next, beta is equal to alpha divided by 1 minus alpha. Alpha beta gamma मध्य रिलेशन ताको यूज करके आम दुटा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दे परियो. गामा इज इक्वल 1 प्लस बीटा बीटा इज इक्वल अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा तीनटा भितर रिलेशन जदि कहबा गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा अल्फा बीटा एवं गामा मध्य रिलेशन बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. Dash is the process of increasing the magnitude of a weak signal without any change in its shape. आम गोटे weak signal को चेंज करवा तार मैग्नेट्यूड को बढ़ेवा किंतु तार शेप रे आम परिवर्तन कराइबा नाही. मनकर गोटे साइनोसॉइडल सिग्नल टी अछि सेटा वीक फॉर्म रे अछि
तार मैग्नीट्यूड को परिवर्तन करा किंतु तार शेप रे किसी परिवर्तन करा नहीं। दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड फेथफुल एम्प्लीफिकेशन। फेथफुल amplification. Faithful amplification. For faithful amplification, the base emitter junction is dash biased and collector base junction is dash biased during all parts of the signal. जिते faithful amplification पाइबा जाऊे तार कंडीशन कहूँ जे बेस एमिटर जंक्शन को आम सदाबले फरवर्ड बाइस रखा एवं कलेक्टर बेस जंक्शन को सदाबले रिवर्स बाइस रखा ताफल आमर फेथफुल एम्प्लीफिकेशन पाइबाटा सहज हो। फॉर फेथफुल एम्प्लीफिकेशन द बेस एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस्ड एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बाइस। क्वेश्चन नंबर 18 डैश सर्किट प्रोवाइड्स ट्रांजिस्टर बायसिंग। ट्रांजिस्टर बायसिंग क्यों सर्किट प्रदान करुच्ची ट्रांजिस्टर बायसिंग से सर्किट को आम कहूचे दैट इज ए बायसिंग सर्किट। बायसिंग सर्किटा ट्रांजिस्टर बायसिंग प्रोवाइड करुच्ची। क्वेश्चन नंबर 19 डैश इज चेंज्ड इफ द टेम्परेचर इज चेंज्ड और द ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस्ड। यदि आम टेम्परेचर को परिवर्तन करदे किंबा ट्रांजिस्टर को परिवर्तन करदे तेबे कहार परिवर्तन हो दैट चेंज इज इन दैट ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंटा तापर ही आइडिया दोची वी कॉल इट एज ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट इज चेंज्ड इफ द टेम्परेचर इज चेंज्ड और द ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस्ड। क्वेश्चन नंबर 20 डैश is the process of making the operating point independent of temperature changes or variations in transistor parameters। सेटा को गोटे प्रोसेस जहाँ फल आम ऑपरेटिंग पॉइंटा इंडिपेंडेंट रोचे टेम्परेचर चेंज सहित किंबा ट्रांजिस्टर पैरामीटर वेरिएशन सहित डिपेंड करूना से प्रोसेस को कहा जाए स्टेबलाइजेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड stabilization. Stabilization is the process of making the operating point independent of temperature changes or variations in transistor parameters. Question number 21 the collector leakage current ICBO collector base emitter टा यानी कि ओपन अच्छी is affected by dash variation. The collector leakage current is affected by temperature variation। temperature परिवर्तन हेले या ultimately vary करिवो। dash is the self destruction of an unstabilized transistor। unstabilized transistor situation रे कोटा self destruction भली काम करुची we call it as thermal runaway। thermal runaway is the self-destruction of an unstabilized transistor। unstabilized transistor रे self-destruction भली जे काम करछि ताको हम कहिबा thermal runaway। Question number 23 stability factor of a biasing circuit is the rate of change of collector current with respect to dash at constant beta and IB। The stability factor of a biasing circuit is rate of change of collector current with respect to dash at constant beta and IB। We call it as collector base leakage current। collector base leakage current। collector base leakage current। Question number 24 dash is the ratio of output current to input current। आउटपुट करेंट एवं इनपुट करेंट मध्य रेशियो को आम कौन कहवा वी कॉल इट एज करेंट गेन। करेंट गेन आउटपुट करेंट एवं इनपुट करेंट मध्य रेशियो वी कॉल इट एज करेंट गेन।
again the ratio of output voltage to input voltage, output voltage एवं input voltage मध्य ratio को आम कहे voltage gain, output voltage to that of input voltage is known as voltage gain. Dash is the ratio of output power to input power, output power एवं input power मध्य ratio को भी कहे power gain. Output current divided by input current gain. Output voltage divided by input voltage gain. Output power divided by input power gain. Question number 27. Voltage amplifier increases the dash level of the signal. Voltage amplifier increases the voltage level of the signal. Power amplifier increases the dash level of the signal. Power amplifier increases the power level of the signal. voltage amplifier टा voltage level को बढ़ाउची, power amplifier टा power level को बढ़ाउची. Dash are used to amplify the signals in the audio frequency range. केउं गुड़िक audio frequency range रे frequency तार signal को amplify करूची. We call it as audio amplifiers. ऑडियो आम्प्लीफायर काम कौन से आम्प्लीफाई करुच्ची सिग्नल को ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज रे. से भाई भाव में डैश आर यूज टू आम्प्लीफाई द सिग्नल्स इन द रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज. केउं गुड़िक रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज रे सिग्नल को आम्प्लीफाई करुच्ची से गुड़िक आम कहे रेडियो फ्रिक्वेंसी आम्प्लीफायर. रेडियो फ्रिक्वेंसी amplifiers are used to amplify the signals in the radio frequency range. Next, question number 31. In dash, the output of one stage is coupled to the next stage by a transformer. गोटे आउटपुट टा अन्य गोटे स्टेट रो इनपुट सांगे आम ट्रांसफॉर्मर साहाय्य कपल कराउछे. दैट टाइप ऑफ एम्प्लीफायर इज नोन एज ट्रांसफर कपल एम्प्लीफायर. ट्रांसफर couple amplifier. Transfer couple amplifier. The output of one stage is coupled to the next stage by a transformer. Question number 32. In dash, the operating point is such that the collector current flows for full cycle of input AC signal. In dash, operating point टा से भली किछि रहिबो जहा फल रे कलेक्टर करंट टा फ्लो करिवो full cycle of input AC. Full cycle of input AC, that is class A amplifier. Class A amplifier. से भाई भाव में in dash, the operating point is such that the collector current flows for half cycle of input AC. ये full cycle थिला class A amplifier. यदि half cycle of input AC रहिबो that is class B amplifier. Class B amplifier. These are the classifications of amplifiers on the basis of their power. Next, dash is the operating point in such that the collector current flows for less than the half cycle of input AC signal. Less than the half cycle of input AC signal, we call it as class C. Class C amplifier. तो class A रे full cycle of input AC, class B रे half cycle of input AC, class C रे less than the half cycle of input AC. ये भली भाव में एम्प्लीफायर गुडी को क्लासिफाई करा गला क्लास A, क्लास B और क्लास C आकार रे. नेक्स्ट आम आलोचना करिबा केतेक वन वर्ड क्वेश्चंस को. वन वर्ड क्वेश्चंस गोटे पदरे आम तार उत्तर को लिखिबा. Which process is the process of increasing the magnitude of weak signal without changing its shape? तो कहिया faithful amplification. Faithful amplification. Faithful amplification है से प्रोसेस जहाँ फल रे आमे तार सिग्नल को मैग्निफाई करिबा, वीक सिग्नल को मैग्निफाई करिबा विदाउट चेंज इन इट्स शेप. Question number 2. Which circuit provides the proper functioning of the transistor? केउं सर्किट गोटे ट्रांजिस्टर रो प्रॉपर फंक्शनिंग की बुझौची. We call it as biasing circuit.
biasing circuit. Question number 3, which circuit ensures the stabilization of operating point? गोटे गुड बायसिंग सर्किट, गोटे गुड बायसिंग सर्किट इनश्योर करुच्ची से ऑपरेटिंग पॉइंट रो स्टेबलाइजेशन को. व्हिच प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द ऑपरेटिंग पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर चेंज इन ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स? दैट प्रोसेस इज नोन एज स्टेबलाइजेशन. स्टेबलाइजेशन हूँ से प्रोसेस जो आम ऑपरेटिंग पॉइंट को इंडिपेंडेंट रोचे कौन टेम्परेचर चेंज बा कौन ट्रांजिस्टर पैरामीटर सहित. ये भाव में आम केतेक 1 मार्क क्वेश्चंस को डिस्कसन कराई नेले. यूनिट नंबर 2 बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड एम्पलीफायर्स फिर इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस को हम देखले. क्वेश्चन नंबर 1 to 15, क्वेश्चन नंबर 16 to 30, क्वेश्चन नंबर 31 to 34, देन केतेक 1 word क्वेश्चंस question number 1 to 3 4. So with this useful and informative notes, let me wind up the session. Thank you.